वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? So Abdul, I have not given. I will provide the same and will be uploaded shortly. Today topic is GST return. It's practical class. We'll discuss GST portal also and theory provision as well. So the GST return mechanism, there is a concept of GST R1, GST R2A, GST R2B, GST R3B, 4, 5, 9, 10, 11. So we'll discuss one by one. Today we are giving the focus on the GST R1 and the concept of GST return overall applicable for the regular taxpayer. GST R4, 5 we'll discuss in the next class. ठीक है? Give me 1 minute. Let me move to the respective page. Yes, I am from Delhi. सैटरडे को नहीं हुआ था क्या लेक्चर? हुआ था ना? That was the lecture. On Saturday we had the lecture. Furnishing details of outward supply, that is GST R1, the section 37, read with rule 59. Who is required to file the details of outward supply? The details of outward supply, whether it is goods or services or both, required to be furnished by every registered person registered under regular tax category, including casual taxable person, except the following person. Means input service distributor, not required to file the GST R1, non-resident taxable person, not required to file the GST R1, person paying the tax under composition scheme, TDS or TCS or OIDAR. इनको छोड़ के बाकी जो भी रेगुलर कैटेगरी में टैक्स पेयर है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उन्हें जीएसटी R1 फाइल करना है. ISD नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, उन्हें जीएसटी R6 फाइल करना होता है. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन GST R5, person paying the tax under composition scheme GST R4, person deducting the tax at source GST R7, person collecting the tax at source GST R8, and OIDAR not applicable in our syllabus. The form number is GST R1. We can file the nil GST R1 through SMS also. What is the due date of the GST R1? Now the due date of the GST R1 is depend upon the registered person has opted monthly GST return or QRMP. What is the full form of the QRMP? Quarterly return, monthly payment of tax.
GSTR 1 as per the law is to be filed on 10th, but commissioner has the power to extend the due date. So what is the due date? Using the power, commissioner has extended the due date. Now, in case of the QRMP, the GSTR 1 would be required to be filed for every quarter. Dhyanish, there is a process given on the GST portal. You have to follow that process, and then you can send the SMS from the registered mobile number. You can file. In case of the QRMP taxpayer, after the end of the quarter, they need to file the GSTR 1 by 13th of the month after the end of the quarter. In case of others, means monthly, the due date is 11th after the expiry of the month. This is for the GSTR 1. Now, what is the IFF? What is IFF? The full form of IFF is Invoice Furnishing Facility. अगर QRMP टैक्स पेयर है, अगर टैक्स पेयर QRMP है, तो मंथ 1 एंड मंथ 2 के लिए GSTR 1 नहीं होगा। GSTR 1 कब होगा? जब वो क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो मंथ 1 एंड मंथ 2 उसके लिए IFF की फैसिलिटी दी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या है ये फैसिलिटी? इसके द्वारा बाय विच द B2B transaction can be uploaded by the QRMP taxpayer. क्या बेनिफिट है? What is the benefit? The benefit is जो recipient है would be able to take ITC in case of monthly return filer. एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने QRMP ऑप्ट किया, QRMP इज एप्लीकेबल अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अप टू 5 CR है। तो लेट्स से मैं बात करता हूं अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। तो अक्टूबर मंथ में GSTR 1 फाइल नहीं होगा। नवंबर मंथ में, अक्टूबर में और नवंबर में GSTR 1 फाइल नहीं होगा, पर दिसंबर के लिए GSTR 1 by 13th of Jan need to be furnished। तो मंथ 1 और मंथ 2 के लिए क्या है? IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये मंथली है, क्वार्टरली नहीं है। क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए GSTR 1 चूंकि क्वार्टर के बाद आएगा, देयरफॉर फॉर मंथ 1 एंड मंथ 2 they have the option to upload the B2B transaction B2B रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पार्टी के ट्रांजेक्शन को अपलोड करने के लिए IFF कैन बी यूज्ड बाय द QRMP टैक्स पेयर। यहां पे लिमिट है मैक्सिमम 50 लाख की आउटवर्ड सप्लाई आप रिपोर्ट कर सकते हैं। B2C है, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। ड्यू डेट क्या है? 13th आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ।
एक बार रीड करते हैं. IFF is a facility provided to the QRMP to file the details of the outward supply in first and second month. The biggest benefit so that credit can be passed to the recipient who is a registered party. It is not mandatory, it is an optional. If he has not furnished IFF, he can upload the detail in the GSTR1. Please note one thing, that the detail filed in IFF will not be replicated, will not be added again in the GSTR1. Twentieth is GSTR3B, 2022-24. Currently, we are discussing the GSTR1. The facility has been provided to allow the details of duly reflected in the 2A as well as in 2B. I will file the transaction, I will report the transaction of the outward supply so that it will appear in the 2A 2B. Where I will report either in the GSTR1 or in case of the QRMP, I will upload in IFF. Kavita, you are late, so that is the reason you have to visit the video again. Just now I have completed what is the QRMP. Geet Chauhan, it was earlier, now there is no problem. You can file the GSTR1 even after 11, there is no problem. 50 lakh ka limit for reporting the B2B transaction. Such delay will not occur as the detailed delay submitted by using IFF will be reflected in 2A, 2B, 4A, 6A. Maximum cumulative value can be 50 lakh in first month and second month. What is the 50 lakh? Details of outward supply. I have the outward supply in month 1. Maximum 50 lakh can be added in the IFF. There is no limit in the GSTR1. Only upper cap has been fixed in the IFF. The invoice had to be furnished between 1st to 13th. After 13th, you cannot upload the details in IFF. The due date is 13th. You can file the IFF only by the due date, not after that. Just 20 तारीख C. The due date of GSTR1 is 11th in case of monthly and 13 in case of quarterly. The due date of the GSTR3B, the monthly 20, quarterly 22 or 24. So whatever I have discussed 20, that was for the GSTR3B, not for the GSTR1. थोड़ा सा आवाज में अभी भी रिकवर नहीं हो पाया. I hope you are able to understand. Because of my health, the class is not getting disturbed. Kindly confirm. आपको मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? थैंक यू सो मच. बट आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? आई डू अग्री दैट वॉइस इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हुई मेरी अभी भी, बट एक बार कंफर्म करें. वट एवर आई एम टेलिंग, इज इट क्लियर टू ऑल?
In the IFF, the taxpayer has to submit the B2B invoice, whether it is inter or intra, debit note or credit note issued during the month. Thank you. The details of outward supply furnished using IFF shall include invoice-wise details of inter or intra made to registered person, debit and credit note issued during the month of such invoices which is pertaining to the prior tax period. What is the cases where a registered person is debarred from filing the GSTR1 or IFF? A registered person shall not be allowed to file the GSTR1 if he has not furnished the GSTR3B for preceding 2 months. A registered person opting QRMP shall not be allowed to furnish the outward supply in GSTR1 or IFF if he has not furnished the GSTR3B for the preceding tax period. If you not furnish the 3B, then you are not allowed to file the GSTR1. And a registered person who is restricted from using the amount available in ECL to discharge his liability toward 99% in excess under Rule 86B shall not be allowed to furnish the details of GSTR1 or IFF if he has not furnished the 3B for the preceding tax period. So these are the restrictions wherein the GSTR1 will not be allowed to furnish. Now, a taxpayer cannot file the GSTR1 prior to the end of tax period. For example, if I like to file the GSTR1 for November, yes, I can file. But if I like to file the GSTR1 for the December, I'm not allowed to file. But there are exceptions. The first is casual taxable person. Suppose today is the last date for the registration of the CTP. Can anybody tell me? क्या कोई बता सकता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन है कितना दिन तक वैलिड रहता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन कितना दिन तक वैलिड रहता है? कैन एनीबडी टेल मी? तो एक तो एक्सेप्शन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और दूसरा है कैंसिलेशन. A taxpayer was applied for cancellation will be allowed to file GSTR1 after confirming the receipt of application. बहुत बढ़िया. 90 plus 90. 90 plus 90. I have talked about maximum time period. आप 60 plus 60 क्यों लिख रहे हैं? कोई सोर्स नहीं है. कुछ पार्टिसिपेंट ने 30 plus 30 plus 30 लिखा है. व्हाट इज दैट? वो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन था. अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो 30 दिन तक जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, उसके 30 दिन तक कमिश्नर जेसी या डीसी, और उसके 30 दिन बाद कमिश्नर हैज द राइट टू अलाउ द फाइल ऑफ रिवोकेशन. What are the content of the GSTR1? What are the content of the GSTR1? The GSTR1 has the following content. GST number, legal name, trade name, aggregate turnover in the previous year, years and month, HSN summary, details of document issued.
Now the details of the outward supplies, B2B, B2C inter greater than 2.5 lakh, B2C other than inter greater than 2.5 lakh, zero rated and deemed export, debit credit note, nil rated amendment advances. Now let's move to the calculation. Let's move to the GST portal and see this table. एक मिनट दीजिएगा. I'll open the portal. Give me only a minute. I'll open the portal. It would be better to explain in the portal itself. So if invoicing applicable, is there need to file the GSTR1? Answer is yes. E-invoicing and GSTR1 are two different things. E-invoice का मतलब क्या है? अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करती है तो आपको मैनुअल या सिस्टम जनरेटेड नहीं बनाना है, आपका IRN and QR कोड होना चाहिए. But you have to furnish the GSTR1. Otherwise, how the recipient would be able to take the ITC. Fine. Let's see. मैंने GST पोर्टल लॉगिन किया है. मैं रिटर्न डैशबोर्ड पर जा रहा हूं. I'll explain everything. What was the 2.5 lakh? What was the consolidated B2C supply? We'll explain everything from the government portal. See, this particular SSE is registered under QRMP. This particular SSE is registered under QRMP. Now, let's say I have selected first month. Click on the search button. What is coming? Details of the outward supply and what is written? IFF. And this is GSTR2A and this is GSTR2B. Let's select November. It will have the same thing. IFF. But now if I select the December, because IFF is only applicable for M1 and M2. IFF is only applicable for M1 and M2. What about the third month? After the end of the quarter, we need to furnish the GSTR1. And therefore, you can see the GSTR1, which is written as quarterly. Due date 13. Now, we'll discuss each and every table. But before, let me go to IFF, and IFF will have the two table. It is B2B outward supply, whether it is inter or intra. It is supply to SEZ or deemed export. And this is debit and credit note. That's it. यहां तक बात क्लियर है. IFF is clear to all. IFF is clear to all. Kindly confirm. Whether IFF is clear to all, kindly confirm. Now, this is GSTR1. You can file the GSTR1 through SMS also,
Otherwise, you have to log into the portal, click on the file GSTR, nil GSTR1. It will directly take you, to the file statement and will ask certain digital signature or OTP, and then you can submit the same. IFF and GSTR1. IFF अगर QRMP में आपने रजिस्ट्रेशन लिया, सॉरी आपकी अगर फ्रीक्वेंसी QRMP है, in that case for month 1 and month 2 you need to give the B2B transaction in IFF. What is the benefit? So that my registered party can get the ITC. Difference in GSTR1 and IFF, you can see in the GSTR1 you can report B2B, B2C, export. Every table will be available in the GSTR1, but in the IFF only 2 tables are available, this one and this one. यानी सभी अंदर जाएंगे तब मालूम चलेगा. अभी हम टेबल को क्लिक करेंगे तब मालूम चलेगा व्हाट इज द 4A 4B. See, it is registered transaction wherein my recipient is registered. कन्हैया सिंह, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आप QRMP में रजिस्टर्ड है, आपकी साल भर की टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, but in any month it exceed 50 lakh, then what? Registered party. In that case, you can maximum upload 50 lakh in current month. Balance you can upload in the next IFF or the GSTR1 as the case may be. But yes, there is an upper cap of 50 lakhs in case of IFF. Table 4A, Table 4B, Table 6B, Table 6C. These are to the registered party. Sales made, outward supply made to registered party. Table 5A and Table 7, these are unregistered party, matlab B2C transaction. What is the difference between Table 5A and Table 7? What is the difference between Table 5A and the Table 7? Both tables are for B2C transaction. Both tables are for B2C transaction. It is interstate having invoice value more than 2.5 lakhs. Table 7, in case of the interstate, up to 2.5 lakh, or intrastate, it will not be furnished here, all will come here. The details are captured invoice wise. If I have 10 invoice, I have to give the 10 line item details. But here the information are given on consolidated basis. Last credit note and debit note. Last credit note and debit note. There is a separate table for debit credit note.
that is table 9B, unregistered. But no separate table, no separate table. So you will put the net amount in the table 7. What is the meaning of net amount in table 7? Let's say you have the sales of 10 lakh. You have the debit note of rupees 1 lakh. You have the credit note of rupees 3 lakh. It means in the table 7, you will report net amount of the transaction, that is 8 lakh in the table 7. Any question? Kindly ask. Can a registered person switch? Yes, it can switch. There is a time limit that we will discuss later on. Abdul, whatever the details added in the IFF, it will not be added in the GSTR1 again for that quarter. Any questions so far? Or give me the confirmation, it is clear. कोई क्वेश्चन तो बताएं, नहीं तो give me the confirmation that it is clear. The difference is not given in the study material. That difference is only for understanding purpose. Even it is not too much important from exam point of view. Fine. Now moving to the again GSTR1. The difference between table 5A and table 7 is clear to all. Oh, yeah, I can add one more. I can add one more difference. I can add one more difference. What is that? Amendment. There is a separate table, and for amendment, yes, there is a separate table. For both, there is a separate table, table 10, and yes, it is for table 9A and 9C. It is not the difference, but I can say compared to reporting like debit credit note, we do not have the separate table for the table 7 transaction. But yes, we have the separate table for making the amendment. You like to write the difference? Okay. मैं आपको 2 मिनट देता हूं. आई एम अलाउिंग यू 2 मिनट टू राइट द डिफरेंस. इफ यू लाइक टू राइट, समवन इज रिक्वेस्टेड. तो मैं 2 मिनट का मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आप जस्ट एक बार डिफरेंस लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो. और जैसे ही आप मुझे कंफर्म करेंगे, आई विल मूव टू द नेक्स्ट.
Should I move to the next page? Please confirm, should I move to the next page? Fine. So should we move to the next discussion? ठीक है सर, अब हम चलते हैं वापस जीएसटीआर 1 में. We have understood the table 5A. We have understood the table 7. Now, table 4, we have prima facie understood that it is the registered. In table, what is written in the fourth table. So I request सुशील, आप किसकी बात कर रहे हो? जो मैंने लिखा वो समझा नहीं यार. Fine. Now this is for registered, but what is the 4A, what is the 4B, what is the 6B, what is the 6C, we'll discuss. Just wait for a couple of minutes. 5A and table 7 we have understood. What is the table 8? That is nil rated supply, non-GST supply or exempt supply. That is nil rated, non-GST or exempt supply. What is the table 9B? 9E, 9B for debit credit note issued to the registered party. Debit credit note issued to the unregistered party, either table 5A or table 6A. For table 7 and table 8, there is no separate debit credit note table. Therefore, you need to put the net amount in the table 7 or table 8. What we have understood? That it is for registered party. Debit credit note issued to this party, it will be reported in 9B registered. Who is the B2C transaction? Which tables are for B2C? Table 5A or table 7? 9B debit credit note for unregistered party. If you have reported the transaction in the 5A or 6A, your debit credit note will come in the 9B unregistered. क्योंकि देखिए, अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो जो मेरा कस्टमर होगा वो लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया होगा, क्या उसके पास जीएसटी नंबर होगा? आंसर वुड बी नो. तो टेबल 6A भी एक तरीके से B2C ट्रांजैक्शन है. Dhyanesh, if you remember that we have discussed the meaning of aggregate turnover.
Whether we will add the exempt supply in the aggregate turnover, answer would be yes. So they are asking the details of exempted supply. Point number one. Point number two, if you remember that section 17 subsection 2 in the input tax credit chapter, section 17 subsection 2, read with rule 42-43. We have discussed if one is exempt supply, one is taxable supply, need to reverse some ITC. How the department would understand whether you are having the taxable supplies or exempt supply or not, because they are asking the details of the table 8. Is it clear? The 2.5 lakh is the invoice value. What is the invoice value? Taxable value, let's say 2,40,000. Tax, let's say 15,000. Total value 2,55,000. This value is the invoice value. And if it is greater than 2.5, would be reported in the table 5A. Clear, Kavita? Sorry, Kanaya. Please confirm that IFF consists of which table? इतनी टेबल में से IFF में कौन सी दो टेबल आएगी? In IFF, which two table will come? The answer is this registered outward supply and debit credit note to the registered. Only these two table will come in the IFF because they pertain to the both registered party. Correct? Please give me the answer. Please give me the answer. If I have the interstate supply, invoice value is 2.40 lakh, where it will be reported. अगर मेरी इंटरस्टेट B2C सप्लाई है तो मैं कहां रिपोर्ट करूंगा GSTR1 में अगर इनवॉइस का वैल्यू 2,40,000 है? B2C. Sorry, I have not added B2C. Can you please answer now? अगर मेरा इनवॉइस वैल्यू 2.40 लाख है, B2C का ट्रांजेक्शन है, where I will report? पीयूष, विनायक, एक बार वापस आप आंसर दे. आंसर वुड बी अगर इंटर स्टेट है, invoice value more than 2.5 lakh will come in the table 5 and up to 2.50 lakh table 7. Please confirm B2C invoice value 3 lakh intra-state where it will be reported. B2C इनवॉइस वैल्यू 3 लाख इंट्रास्टेट कहां पे रिपोर्ट करना है? इंट्रा स्टेट एनी वैल्यू
will have always come in the table 7. This is only for inter. This is only for inter. What is the table 4A, 4B, 6B, 6C? Let's see. If I am making the B2B supply, it will be the 4A. It means I am not required to tick any of the option, directly put the GST number, etc. Mr. Ansari, table 5A would be reported only when the transaction is entered. In my question, Anand, it was intra, therefore it will be reported in the table 5, table 7. Clear, na? So, what is the table 4B? B2B, but it is covered under reverse charge. Example, let's say I am advocate, but registered in the GST. You are also registered in the GST. Who will pay the tax? We all know that in the legal service given by the advocate, it is covered under reverse charge. Therefore, I will put your GST number here and tick this option. If I tick this option, it means that on this transaction, it is B2B supply, but supplier will not require to pay the tax. The tax will be paid by the recipient. Table 4A and 4B both are clear. एक बार confirm करें. 4A and 4B both are clear. Now moving to the intra-state, means within the state. There is some exception. There is some exception. There is some exception in case of the RCM. So I'm not sure whether it is applicable on you or not. It will be probably, if you have discussed the RCM chapter, then probably you have discussed this exception also. But about B2C, RCM can never be B2C. RCM can never be B2C. Because in case of the recipient, you remember section 24, clause 3rd, that recipient has to take mandatory registration in case of RCM. So in case of the RCM, it is not possible that transaction can be B2B. Yes, it can be possible C2B. It means, let's say I'm advocate. I am not registered, but you are registered. In that case, because I am not registered, any GST provision not applicable to me. So that would not require to be reported by me. You being a registered, you will report in the GSTR 3B and claim the ITC. 6A is export. There is a separate table. 6B and 6C. It is supplied to the SEZ unit, and 6C is the deemed export. Suppose I'm making the supply of deemed export, I will tick this. And if I'm making the supply to the SEZ unit with payment or without payment, accordingly, I will tick this option. Once again, I'll tell 4A, it means B2B and forward charge transaction. 4B, it is B2B but covered under RCM. 6B, it is SEZ supply, and 6C, it is a deemed export. All are clubbed and reported in one table. Is there any invoice value limit, Anand? Answer is no. No limit.
So so whenever you put the right GST number, every detail will come and you have to report the value, etc. Now let's say we are going to the table 11. Table 11, advance received. 6C deemed export. Yes, 6 is the deemed export. So export related transaction is not covered in your syllabus. What is the deemed export? Supply to the export oriented unit. Supply against advance authorization. Supply against EPCG license. Not covered. Only for the sake of the knowledge, I have given the information. Now, if I have received the advance and I need to pay the GST, we all know that advance against supply of the service are taxable in the current date. If you receive the advance, you will club here and pay the taxes in the 3B and adjustment of advances. What is the meaning of adjustment of advances? All are requested to give the answer. In the month of January, you have given the advance of rupees 1 lakh. I have paid the GST on that in the month of Jan because it is supply of service. Now, in the month where I have reported, in the table 11A of the GSTR1 and how I have paid the taxes will always be paid through GSTR3B. Whenever we are talking about the payment of taxes, it will always through GSTR3B. ठीक है, अब आप मुझे बताएं, फैब मंथ में मैंने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया 1 लाख रुपए का. Do I need to pay the taxes in the month of Feb? Just confirm. ये सर्विस जिसका एडवांस लिया था, I have completed the service in the month of Feb. I have issued the tax invoice to my party. I have to report in the GSTR1. Let's say it is a B2B party. I have reported in the table 4A. You tell me, do I need to pay the taxes on 1 lakh rupees, which is reported in the Feb? क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा in the month of the Feb because I have reported in the GSTR1? The answer is no. If I have paid the taxes at the time of advance, then obviously I will not pay the taxes when I issue the tax invoice. सर 1 लाख रुपए के ऊपर मैं ऑलरेडी 18% जनवरी में पे कर चुका हूं, वापस फरवरी में क्यों पे करूंगा? I'm asking the participant who has given the answer as yes. You and me have agreed for service. I have given the consultancy of rupees 1 lakh. आपने मुझे 1 लाख रुपए जनवरी में दिया, मैंने इसके ऊपर टैक्स पे किया, फरवरी में मेरी सर्विस कंप्लीट हुई, मैंने आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया. क्या मैं फरवरी में वापस टैक्स पे करूंगा? Answer would be no, because on this transaction I have paid the taxes in the month of Jan itself.
So in the month of January, I have reported this transaction. In the month of Jan, I have reported this transaction in this table. But in the month of Feb, I will report here. If it is B2B or if it is B2C, I will report here. Because I have reported, probably there may be the question of taxes by the government. Then they have given the table 11B, adjustment of advances. In the month of Jan, you have paid here. In the month of Feb, whenever you are reporting the invoice, equivalent amount you will write here. So it means it represents that you have the tax invoice, but you do not require to pay the taxes because it is adjustment of advances. You are adjusting the advances on which paid the taxes in the earlier period. होगा क्या, जनवरी में मैं सिर्फ यहां पे रिपोर्ट करूंगा, फरवरी में मैं यहां पे भी रिपोर्ट करूंगा एंड यहां पे भी रिपोर्ट करूंगा. ये मेरा टैक्स इनवॉइस है जिसके कारण लाइबिलिटी, ये मेरा रिडक्शन इन द टैक्स लाइबिलिटी है. तो नेटिंग ऑफ इट विल बी 0. एक बार कंफर्म कीजिए, दिस टेबल 11A and B are clear to you. A and B are clear to you. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. Now we are moving to the table 12. It is HSNY summary. What is the requirement? If your aggregate turnover up to 5 CR, then for B2B, it is 4 digit. For B2C, it is optional. If my aggregate turnover exceed 5 crore, whether it is B2B or B2C, 6 digit I have to report. Anand, yes, you can issue the invoice at the advance time. No issue, no problem. If you have issued the invoice, then directly it will come in the table 4A, matter close. But suppose at the time of advance, I'm not issuing the tax invoice, then what? Then 11B would be used in the subsequent period when you are issuing the tax invoice. Right, Priyanka? If the supply is not made and advance has to be refunded, then there is a separate process we are not discussing right now. In the document, you are correct, Geet, that you will issue the tax invoice, you will issue the refund voucher. That is correct. Now, any table, if you need to amend the table, you have to click here. You will find all the amendment table, amendment B2B, amendment B2C large, amendment export, amendment of debit note, credit note, registered party, amendment to the debit, credit note to the unregistered party, amendment to the B2C, amendment to 11A or 11B. You will find all the amendment in this table. Megha, please confirm which part you want me to repeat. Okay. Let me repeat once again that advances. In the month of Jan, I have received the advance. I will
issue the receipt voucher, will pay the tax. How I will pay the tax? 11A 1 and 2 I will report, and through 3B I will pay the tax. In the month of February, I have issued the tax invoice of rupees 1 lakh on my completion of service. I will report here, but I am not required to pay the taxes. And as a result, I will report here also. So it represents that to the extent of this amount, आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है. ये वाला बात क्लियर है मेगा? एक और कंफर्म कीजिए सो दैट आई कैन कम टू द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर आनंद. ये बात क्लियर है? एक बार कंफर्म करें. देन द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड बाय आनंद दैट क्या हम एडवांस के टाइम पे इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते? बिकॉज सेक्शन 31 सेज ऑन और बिफोर. इट मींस आई कैन इश्यू द इनवॉइस इवन बिफोर ऑल्सो. अब अगर जनवरी में मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो इट विल नॉट कम हियर. इट विल सिंपली डायरेक्टली पुट रिपोर्टेड इन द 4A 4B 5A एटसेट्रा. रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है. नाउ मूविंग टू द नोट्स वंस अगेन. एक बार रीड करें ये एंड कंफर्म करें कि क्लियर है या कुछ क्वेश्चन है. B2B, B2C. Kindly read and then confirm that it is clear or not clear. Is it clear or not? Kindly confirm. ये वाला टेबल हमने कौन सा डिस्कशन किया था? दिस B2B, इट इज ए टेबल 4A, 4B, 6B या 6C. और इसके लिए हमने कौन सा बात किया था? टेबल 5A एंड टेबल 7. आनंद राइट, इट इज एन एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनवॉइस issued during the tax period on which you have paid the taxes in advance in the prior period. आनंद, एक इनवॉइस तो एक ही होगा ना 1 लाख रुपए का. या तो मैं एडवांस के टाइम पे इश्यू कर दूं या मैं सप्लाई कंप्लीट होने पर कर दूं. अगर मैंने इनवॉइस के थ्रू हैंडल किया, आई हैव नॉट इशूड द रिसीट वाउचर, देन इट विल नॉट कम 11A, इट विल नॉट कम इन 11B. अगर मैंने एडवांस के टाइम पे रिसीट वाउचर इश्यू किया, इट विल कम इन 11A. और जब भी मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू करूंगा, इट विल बी रिपोर्टेड इन 4, 5 और 6, 4, 5 और 7. और साथ ही साथ एडजस्टमेंट में भी करूंगा ताकि मुझे उतना टैक्स ना देना पड़े जितना मैं एडवांस पर दे चुका हूं. इज इट ओके? What is the full form of HSN? HSN is the Harmonized Commodity Description or Coding System. A standard system of the nomenclature of the different goods developed by the WCO. What is the WCO? World Custom Organization, which is accepted globally.
Now let's read the particular of the same party invoice value cross 2.5 lakh. Mitesh Bhai Patel, if it is B2C transaction and individual invoice value cross 2.5 lakh, you have to report individual invoice. You have the two invoice. Each invoice have the value of 3 lakh rupees. Party same, you have to add 2 times. What is the time limit to rectify the mistake? Suppose in the GSTR1 there is some mistake. You like to do the amendment. What is the time limit? Now here you will treat the same as 30th November or furnishing of annual return, whichever is earlier. If advance is received on export, you will report. Would you like to issue the receipt voucher at the time of advance or tax invoice at the time of advance? Kindly confirm. अगर आप tax invoice issue करोगे, in that case it will come in the 6A. It will come in the 6A, right? Question is, what is the maximum time limit to make the amendment earlier of below 2 dates? What is the 2 date? That this is amended. This is amended. So now रिसीट वाउचर इनवॉइस नहीं निकल, तो रिसीट वाउचर अगर आपने इश्यू किया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एडवांस में, टैक्स पे करना पड़ेगा, एज्यूमिंग यू आर डूइंग द एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी. So what is the due date? What is the time limit to do the rectification? 30th November following the end of the financial year or filing of annual return, whichever is earlier. Yes, nil GSTR1 can be filed. So I think GSTR1 is completed. Any question on the GSTR1? Happy to take these questions first before moving to the GSTR3B. यस राइट आनंद यार, मैं कंसिस्टेंटली टच में हूँ डॉक्टर पे, पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये धीरे धीरे टाइम लेगा, एंड बिकॉज इन दिल्ली देयर इज ए गुड अमाउंट ऑफ द पॉल्यूशन, तो ये थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लग रहा है. दैट इज द मेन रीजन यार. थैंक यू सो मच फॉर योर केयर. नाउ वी आर मूविंग टू द GSTR2A as well as GSTR2B. नहीं वेदांत, I have only explained that table so that you have the practical experience. For exam point of view, there is whatever given in the syllabus, you need to ensure that only. If that table ka reference is not given in the study material, not required to remember. Mohammed Vora, yes, we can file. Suppose there is no outward supply, I have to file the GSTR1 as a nil. So you can see this file nil GSTR1. श्योर सर, मैं अहमदाबाद आ जाऊंगा.
What is the nil GSTR1? Vedant, GSTR1 is clear. GSTR1 means details of the outward supply. Suppose in the month of November, I do not have any sale. I do not have any outward supply. So I have to file the nil GSTR1. Nil means there is no details, no data, no outward supply in the respective tax period. What is the time limit for opting IFF? We'll discuss in some time. Yes, Dhyanesh. If supplier not file the details through IFF or GSTR1, the same would not be available in the GSTR 2B of the recipient, and hence ITC won't be available. एक बार हम पहले GSTR 3B का डिस्कशन करते हैं एंड देन आई विल come again to explain the 2A and 2B concept. What is GSTR 3B? What is GSTR 3B? The GSTR 3B is monthly or quarterly summarized return. I did not file GSTR in October. I want to file November. Not possible. There is a continuous filing necessary. If you missed any GSTR1, you cannot file the GSTR1 of next period. That has been discussed also and has been logged also. Dhyanesh, advance means like I am a lawyer and you have approached me for any legal consultancy or any case which I have to appear in the High Court. I told you, you have to pay the advance of rupees 1 lakh. No, let's say I am a chartered accountant, not take the example of advocate because it is under RCM. I am chartered accountant and I am approaching any appeal matter or I am preparing one opinion. I have told you, please pay me the advance of rupees 1 lakh. Then only I will start working on your case. You are paying the advance money to start the transaction or to start the work. That is advance for supply of the service. I need to pay the GST at the time of advance. Kavita, just wait for some time. We'll discuss what is the 2A and what is 2B. I have to explain. In between, I am taking the topic of the GSTR 3B. Sir, I have taken QRMP and for the month of October, my turnover is more than 50 lakh. Okay. And I furnished it in GSTR1. Then for the next month, can I furnish an IFF? See, either IFF or GSTR1, point number 1. You will not add the transaction in both. Point number 2, if you selected QRMP, you will not allow to file in the month of October. You are not allowed to file GSTR1 in the month of October. Then, if it is more than 50 lakh, then try to add whatever you can add in the October IFF and then add in the November IFF balance. The GSTR1 would come for the quarter December and which is to be furnished in the January month. Is it clear? Piyush, clear hua?
3B is the summary of inward and outward supply. You will take the ITC. You will take the ITC. You will pay the taxes through GSTR 3B. Details of the inward supplies or outward supplies. Detail of inward supply and outward supplies का कंसोलिडेशन है, समराइज्ड रिटर्न है, ये समराइज्ड रिटर्न है, इट इज नॉट द डिटेल रिटर्न. सो वेन एवर यू वॉन्ट मी टू रिपीट एनी पार्ट ना, एक बार आप लोग ना लिखा करें साथ में, क्योंकि जब तक आपका मैसेज आता है प्रोबेबली आई एम टचिंग द नेक्स्ट पार्ट, तो मुझे ये मालूम नहीं चलता कौन सा पार्ट आप रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं. मुझे कोई भी पार्ट रिपीट करने में इश्यू नहीं है, बट प्लीज क्लैरिफाई विच पार्ट आई हैव टू रिपीट. ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़ा लेट आता है एंड मीनवाइल आई एम टेकिंग 2-3 पार्ट इन बिटवीन, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कई बार कि कौन सा पार्ट आप रिपीट करने का बोल रहे हैं. मितेश भाई पटेल, if I wrong uploaded in GST number, any option for editing after filing the return? You cannot file the revised return. Once you file the return in subsequent month, you can do the amendment. In the GSTR1 subsequent month, you can do the amendment. हाँ प्रणव, ये हो सकता है आईएफएफ को भर दिया और हमने नहीं भरा आईएफएफ को, नेक्स्ट मंथ का आईएफएफ, ये पॉसिबल है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज इन द जीएसटीआर1 कि जीएसटीआर1 सीक्वेंस फाइलिंग है. अगर आपने इस मंथ या क्वार्टर का नहीं भरा तो अगले मंथ का आपको जीएसटीआर1 अलाउ नहीं होगा. जीएसटीआर1 आईएफएफ सिर्फ क्वार्टरली के लिए ऑप्शन है, जीएसटीआर1 मंथली के लिए है, या क्वार्टर के केस में आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर है. आईएफएफ में सिर्फ 2 टेबल आती है, जीएसटीआर1 में सारी टेबल आती है. आईएफएफ में अपर लिमिट है 50 लाख तक की, जीएसटीआर1 में कोई लिमिट नहीं है. आईएफएफ में सिर्फ B2B के ट्रांजेक्शन को ऐड किया जा सकता है, जीएसटीआर1 में सभी को ऐड किया जा सकता है. दीज आर द डिफरेंस. इज इट ओके आनंद? If a QRMP filed IFF for October and November, then the same detail need to be furnished? No. Mr. Ali, जो डिटेल मैं IFF में ऐड कर दूंगा will not be added again in the GSTR1. Please note, either in IFF or in the GSTR1, not in both. ठीक है, अब एक बार ब्रेक लेते हैं. We'll take the break till 7:30 and we'll resume at 7:30 once again. अशोक जी ब्रेक स्टार्ट कर दीजिए 7:30.
ठीक सर। IFF in each quarter for month 1 and month 2. Is there a choice right to file the GSTR in each month or each quarter? The choice is QRMP. If your aggregate turnover up to 5 crore, you have the choice to go for QRMP or go for monthly. If you selected monthly, then you have to file every month a GSTR1. You have to file every month a GSTR3B. No IFF in case of monthly. Is it clear, Vedant? And if I have selected QRMP, then for every quarter GSTR1, for every quarter GSTR3B. For month 1 and month 2, there would be the IFF for B2B transactions. My turnover is 70 lakh, for November 60 lakh. So in the November IFF, I need to file the balance 20 lakh of October, or I need to file 50 lakh of November itself. Your choice. It's your choice. Whatever you like to add, but upper limit is 50. Dhyanis will discuss later on. Right now, we will not discuss GSTR 9 annual return. So let me move to the content of the GSTR 3B. Gaurav, invoice furnishing facility. What is the content of GSTR 3B? The content of GSTR 3B, we are discussing that it is a summarized return. And it will have the details of outward supplies, inward supplies under RCM, ITC, exempted nil-rated non-GST supply, late fees or interest, etc. Go to the study material, GSTN legal name, year, month, quarter, summarize details of the outward supplies and inward supply liable to reverse charge, summarize details of the interstate supply made to unregistered composition and UIN, eligible and ineligible ITC, value of exempted nil-rated non-GST, payment of the taxes, etc. Now, please note one thing. It is table 3.1. It is table 3.1. This is table 3.2. This is table 4. This is table 5 and this is table 6. In between, one more new table is added. What is that table? 3.1.1. 3.1.1 has been added. Supplies notified under 9.5. Can anybody give me the example of 9.5 transactions? We have discussed in the registration chapter. क्या कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है 9.5 ट्रांजेक्शन का? नाइन फाइव के ट्रांजेक्शन के लिए इन्होंने एक नई टेबल ऐड की है। 9.5 ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से जो 4 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं सर्विस के, जोमेटो, उबर, स्विगी, ओयो, ओला, करेक्ट? These are the transaction in which e-commerce operator would be considered as deemed supplier. Because वो e-commerce operator deemed supplier है, उसे 3B में अपने ट्रांजेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो वो ट्रांजेक्शन कहां बताएगा? वो यहां पे 3.1.1 में रिपोर्ट करेगा। So that is a new addition.
Rest all are same. So we can going to the study material once again. What is the due date of the GSTR 3B? Again, if you opted monthly, the due date would always be 20. If you opted monthly, the due date would always be 20. If you opted quarterly, then due date would be 22 or 24. Now try to understand one important thing. वापस अगर ड्यू डेट की बात करूं, द ड्यू डेट वुड बी 20 इन केस ऑफ मंथली, 22 या 24. ऐसा दो क्यों? बिकॉज दे हैव डिवाइडेड द स्टेट इन टू पार्ट. They have divided the state in two parts. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात एटसेट्रा 22 एंड हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा 24. ठीक है, ये कब? QRMP में. मंथली के केस में ऑलवेज 20. अब एक बात और है, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QRMP? क्वार्टरली रिटर्न and monthly payment. Quarterly return and monthly payment. Dhyanis, in case of the QRMP, the due date for the GSTR 3B after the end of the quarter would be 22 or 24. In case of the monthly GSTR 3B, the due date would be 20. Yes, that point I'm telling. Abdul, this same point I'm telling. If I am under QRMP, month 1, month 2, and month 3, that is quarter, we are under QRMP, so the return would be filed on quarterly. That is crystal clear. It means GSTR 1 and GSTR 3B would only come after the end of the quarter. What about month 1 and month 2? For outward supply, we are filing IFF. For payment of taxes, you will file or you will pay the taxes through PMT 06. What is the PMT 06? It is nothing but challan, and we have discussed in the previous class what is challan, how to pay the taxes. Same, I have to use and pay the taxes by 25th of next month. What is the due date of IFF? 13th of next month, 13th of next month, and 13th after the end of the quarter. What is the due date of the PMT 06? Payment of the taxes 25th. But in the 3B, because it is QRMP, so the due date has been staggered, divided to reduce the workload on the last date. Any question on this slide? Any question on this discussion? Please let me know. क्या आपका कोई क्वेश्चन है? कृपया बताएं. Sir, payment of the taxes, you have to put only amount.
For filing the return, you have to give multiple details. So they are asking only taxes component. Let's move to the GSTR 2A and GSTR 2B. See, Abdul, what would be the amount to pay the taxes? That we will discuss tomorrow or next class. Not tomorrow, in the next class. For making the payment of the taxes, there are two methods. So indirectly, I can say your answer is positive. Yes, you can. But let's wait for some time. In the next class, we will discuss what are the two methods for the making the payment of the taxes, to calculate the payment of taxes. That we will discuss in the next class. Okay. No, sir, I do not have any question. Great. Section 38 talking about the inward supply. Read with rule 60. GSTR 2A, this statement is updated on real-time basis. It is nothing but the details of the inward supplies. It is nothing but the details of purchases or expenditure incurred during the tax period from registered party. So the benefit and the reason of the GST IFF is the corresponding details would be available in the 2A or 4A or 6A. GSTR 6 would be for input service distributor, GSTR 4 would be for composition levy, and the GSTR 2 for regular taxpayer. I am making the supply to any of the party. I will upload the detail in the GSTR 1. The same would appear in the GSTR 2A in case of regular taxpayer, 4A in case of the composition taxpayer, 6A in case of the ISD. Details of the invoice furnished by the non-resident taxable person, ISD in the GSTR 6, TDS in the GSTR 7, TCS in the GSTR 8 are made available to the recipient. Further, 2A would also disclose the bill of entry. GSTR 2A is not relevant for ITC, but GSTR 2A is a document. You should have the knowledge of the document, and then only you will be able to understand the difference between 2A and GSTR 2B. आपका point valid है मोहम्मद, but only point if you are able to understand 2A, then only you will be differentiate with 2B. तो 2A में क्या है? Import of the goods. अगर मैं आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करता हूं या SEZ से गुड्स परचेस करता हूं, then it will come in the 2A. Now we are moving to the GSTR 2B. GSTR 2B एग्जैक्टली सेम है जो 2A है, बट ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है जो कि 13th की मिडनाइट को जनरेट होता है। 13th की मिडनाइट को जनरेट होता है। फिक्स मतलब क्या? फिक्स मतलब क्या? ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। अगर 2A की बात करूं, ये रियल टाइम पर अपडेट होता है।
डिफरेंस क्या है इन दो बातों में? बड़ा, इसी बात में बड़ा, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि लेट्स से सप्लायर ये समझिएगा, अगर ये क्लियर हो गया तो एकदम कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सप्लायर ने GSTR1 लेट से अक्टूबर का या नवंबर का ड्यू डेट में फाइल कर दिया, आई एम एज्यूमिंग मंथली GSTR1 है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है 2A में भी आएगा और 2B में भी आएगा। ड्यू डेट इज 11 दिसंबर। अब एक बार एज्यूम करते हैं GSTR1 नवंबर मंथ का, लेट से इट इज बीइंग फर्निश्ड ऑन 15 दिसंबर। ये GSTR2A में तो जाएगा ऑफ नवंबर, बट GSTR2B ऑफ नवंबर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना GSTR1, सप्लायर ने GSTR1 आफ्टर द ड्यू डेट फर्निश किया। तो ये कब जाएगा? ये नेक्स्ट मंथ के 2B में जाएगा, 2B ऑफ दिसंबर में जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट को नवंबर में नहीं मिलेगा, ही वुड बी एंटाइटल टू टेक ITC इन दिसंबर। किस किस पार्टिसिपेंट को ये वाला बात क्लियर हुआ, एक बार कंफर्म करें चैट पर। मैं रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां तक किस किस को क्लियर हुआ एक बार कंफर्म करें। रिपीट तो मुझे वैसे भी करना है, क्लियर हो या नहीं हो। जिसको क्लियर हो गया उसको डबल क्लियर हो जाएगा, और जिसको अभी समझ में नहीं आया वापस वो समझ लेगा। इसके पहले मुझे बता दीजिए 2B में ट्रांजेक्शन आने का बेनिफिट क्या है रिसिपिएंट को? ITC। अगर सप्लायर GSTR1 ड्यू डेट में फर्निश करता है तो ये ट्रांजेक्शन 2A में भी जाएगा और 2B में भी जाएगा ऑफ सेम मंथ। अगर सप्लायर GSTR1 लेट फाइल करता है आफ्टर ड्यू डेट, अगर सप्लायर GSTR1 आफ्टर ड्यू डेट फाइल करता है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, बट इसमें क्या है, सेम की जगह नेक्स्ट मंथ में जाएगा। और नेक्स्ट से क्या प्रॉब्लम होगी, रिसिपिएंट के ITC नहीं मिलेगी उसे सेम मंथ में, उसको वेट करना पड़ेगा अगले महीने। एक बार बात करते हैं, सेम बात करते हैं, लेट्स से ड्यू डेट क्या है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द GSTR1 ऑफ दिसंबर QRMP के केस में? QRMP के केस में दिसंबर, लेट से दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूं, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द GSTR1? 13th। GSTR1, आई एम टॉकिंग अबाउट GSTR1। मोहम्मद,
स्टैटिक का मतलब फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होता हर बार, 13 तारीख की मिडनाइट को जनरेट होता है। अभी बात करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। अगर 13 को फाइल कर दिया तो GSTR 2A एंड GSTR 2B ऑफ दिसंबर वुड अपीयर इन द रिसिपिएंट। बट अगर ड्यू डेट के बाद फर्निश किया तो GSTR 2A में तो आएगा, बट 2B में नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब क्या, दिसंबर में नहीं आएगा, जनवरी में तो आएगा ही आएगा। देखो इसीलिए 2B का डेट क्या रखा, GSTR 2B का डेट क्या रखा, एक रिसिपिएंट QRMP टैक्स पेयर से भी परचेज कर सकता है या मंथली टैक्स पेयर से भी परचेज कर सकता है। तो 2B जनरेशन का डेट 13th मिडनाइट के बाद, 13th मिडनाइट के बाद रखा है। मतलब जब मिडनाइट हो जाएगी उसके बाद ये जनरेट होगा, ये अवेलेबल होगा, ताकि जिसका GSTR 1 मंथली है तो उसका 11 का ड्यू डेट है, और जिसका GSTR 1 या IFF QRMP में 13 का ड्यू डेट है, तो इट विल बी एड बोथ द ट्रांजेक्शन, इट विल एड बोथ द ट्रांजेक्शन। एक बार कंफर्म करें, इज इट क्लियर? यहां तक जो डिस्कशन है वो क्लियर हुआ? 2A और 2B में क्या डिफरेंस है? Everyone kindly give me the confirmation. Due date of the GSTR 1 for QRMP is 13, 22 और 24 3B की ड्यू डेट है इन केस ऑफ QRMP। आंसर इज नो। गीत, आप 2B की बात कर रहे हैं, करेक्ट? GSTR 1 ड्यू डेट क्या है, 11, भले आप 12 को फाइल करो ये नहीं आएगा 2B में। आफ्टर ड्यू डेट इट विल गोज टू द नेक्स्ट 2B। GSTR 1 इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग है, बट इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो टैक्स के ऊपर लगता है ना सर, और टैक्स हम 2B 3B के माध्यम से पे करते हैं। क्लियर ना? The statement in the 2B for every month shall be made available for first and second month of the quarter in the IFF by a registered person or in the GSTR 1 other than QRMP, whichever is later. In the third month of the quarter, a day after the due date of furnishing the details of outward supply in GSTR 1, that is 13th, इसका मतलब क्या, 13th की मिडनाइट के बाद होगा। जुलाई का कब जनरेट होगा, 14th अगस्त को, मतलब 13th की मिडनाइट के बाद। अगस्त का 14 सितंबर, सितंबर का 14 अक्टूबर। अब मैं GSTR 4 पे अभी नहीं जाऊंगा, CMP 8 पर भी नहीं जाऊंगा। इस पे आते हैं, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। किस पे पेनल्टी लगेगी? देखो पेनल्टी 3B और 1 के ऊपर नहीं है, ठीक है। 3 चीज में डिफरेंस, लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी। लेट फीस अगर टाइमली फाइल नहीं किया तो इट विल हैव द लेट फीस, 20 रुपीज पर डे अगर नील टैक्स लाइबिलिटी है, 50 रुपीज पर डे अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। दूसरा, इंटरेस्ट GSTR 1 पे नहीं लगेगा, क्योंकि GSTR
क्योंकि GSTR1 के थ्रू आप टैक्स का पेमेंट नहीं करते। वी आर पेइंग द टैक्सेस थ्रू 3B। सो अगर 3B लेट फाइल किया है तो लेट फीस भी लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा। तीसरा, पेनल्टी फाइलिंग पे नहीं लगती, अगर नहीं फाइल किया तो लगती है। That is altogether different chapter. Section 122, 73, 74 we'll discuss in the final. So the penalty concept will not be applicable in case of the delay filing, but yes, late fees and interest would be applicable. GSTR2 का अब कोई यूज नहीं बचा। फ्रैंकली स्पीकिंग GSTR2A का, क्योंकि पहले क्या था, ये आईटीसी के लिए यूज हुआ करता था इनिशियली, बट अब जनवरी 22 से हमने 16 सबसेक्शन 2 में एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया एंड रूल 36(4) में अमेंडमेंट कर दिया। एज ए रिजल्ट 2B वुड बी द डॉक्यूमेंट फॉर टेकिंग द आईटीसी। B would be the document for taking the ITC. If the amount is not shown in the 2B, तो ITC नहीं मिलेगा। 16(2)AA not satisfied, no ITC. Right. It is better to file incorrect return rather than late return. So incorrect is also attract penalty. Incorrect will also attract penalty. If you are reporting some falsified data, misstatement, it will attract the penalty. Sorry. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है बेटा, आई टेक केयर, आई टेक केयर। अब हम आते हैं ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखो, जहां पे मंथली 3B है, जो ड्यू डेट 3B की है वही ड्यू डेट टैक्स पेमेंट की है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इन केस ऑफ द मंथली टैक्स पेयर, monthly return filer, what is the due date for payment of tax? Your answer would be 20. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि QRMP के केस में टैक्स पे करने की डेट क्या है, मंथ 1 और मंथ 2 के लिए उन्होंने 25th बोला, बट थर्ड मंथ, बिकॉज फॉर द क्वार्टर वी विल फाइल द 3B, so whatever the due date of 3B, 22 or 24, the same would be there for due date of the payment of taxes. तो जहां पर 3B फाइल होगा वहां पे जो 3B का ड्यू डेट है, the same would be for making the payment of taxes. अब टैक्स को पेमेंट करना है PMT 06/25th. However, Commissioner can extend the correct. Now, very interesting. Very interesting. Thank you, beta. Thank you. Thank you. I'll take care. अब बात आती है कि अगर मैं QRMP हूं, मैं QRMP ऑप्ट किया है, तो मंथ 1 एंड मंथ 2 में जो टैक्स पे करूंगा, कितना अमाउंट पे करूंगा, इसका ध्यान से सुनिएगा। देयर आर 2 मेथड, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। देयर आर 2 मेथड, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। इनमें से कोई भी मेथड मैं चूज करके
यूज कर सकता हूं मेकिंग द पेमेंट। अब देखो, सर्विसेज, पेमेंट, रेट चला। अब यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाऊंगा मैं आपको। हियर यू कैन सी द टू ऑप्शंस। दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली और एनी अदर। अगर मैं क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हूं एंड मुझे 25th मंथ 1 एंड मंथ 2 जो मैं टैक्स पे करूंगा, दैट आई हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 1, monthly payment for quarterly return. Once I select this, automatically there are two further question or further option coming. I have to select one. What is that? These are the two method. It is also called as fixed sum method and it is self-assessment method. Whenever we are making the payment of the tax through PMT06, it is asking that are you paying because of QRMP or are you paying because of any other reason? If I am under QRMP, I have to select first, otherwise I have to select second one. Whatever I will select, then there is no problem. Automatically the challan would come, which we have already discussed. Now, if I have opted fixed sum method, then I have to pay 35% of the tax paid in cash. In the return for the preceding quarter where the return was furnished quarterly. Now, how much I need to pay the tax, it will depend upon the last period. Let's say I am talking about how much I have to pay the tax of October or how much I have to pay the tax of November. Go to the previous period, quarter, that will be July to September. Now in the July to September, if the frequency is also QRMP, then the GSTR 3B of September quarter, whatever the taxes you paid in cash, multiply by 35%, that much amount you will pay in October, that much amount you will pay in November. Try to understand with the help of example. October, there is a sales of 5 lakh rupees and tax liability is 25,000. In the month of November, there is a sales of 10 lakh rupees or there is no sale. This party is under QRMP. Question come, how much amount we need to pay the taxes for October, for November? What is the due date of October? 25th November. What is the due date of November? 25th December. अगर आपने फिक्स सम मेथड का ऑप्शन चूज किया है, सेल्फ असेसमेंट की बात में करेंगे, अभी हम बात करें फिक्स सम मेथड की। अगर इस एसएससी ने क्यूआरएमपी में टैक्स पे करने के लिए 35% वाला मेथड चूज किया है, इन दैट केस entirely ignore the actual transaction
इस एसएससी का कितना टैक्स लाइबिलिटी है, ये बात पर डिपेंड नहीं करेगा. वी हैव टू गो द प्रीवियस क्वार्टर फ्रीक्वेंसी. अगर प्रीवियस क्वार्टर फ्रीक्वेंसी भी क्यूआरएमपी है तो एक बार जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. एक बार मुझे बताना, इस पर्टिकुलर एसएससी ने जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसने कितनी बार 3B फाइल किया होगा? इफ दिस एसएससी इज अंडर QRMP फॉर द प्रीवियस पीरियड ऑल्सो, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर में उसने कितनी बार 3B फाइल किया? In case of QRMP, he has filed GSTR 3B only after the end of the quarter, that would be 1. करेक्ट. तो जब ये सितंबर क्वार्टर का GSTR 3B फाइल करेगा, that would represent liability for 1 month or that would represent liability for 3 month. एक बार कंफर्म करना कि वो 3 महीने की लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा या 1 महीने की लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा. The answer would be, it would represent the 3 month ka liability. Let's say the liability is of 1 lakh and there is an ITC of 60,000. There is a liability of 1 lakh and there is a ITC of 50,000. So kitna cash pay kiya hoga? How much he has paid the cash? 40,000. In the GSTR 3B for the September quarter, there is a liability of 1 lakh. There is a ITC of 60,000. Therefore, he has used cash 40,000 while filing the previous quarter 3B. अब ये 40,000 represent 3 month का liability. इसका ये 35% करो तो 14,000 would be deposited in the month of October. कितना होगा? 35 दूना 70, 7 दूनी 14. 14,000 would be deposited for the month of November. Is it clear? फिक्स सम मेथड में एक बात ध्यान रखना, फिक्स सम मेथड में कितना डिपॉजिट करना है ये डिपेंड करता है प्रीवियस क्वार्टर फ्रीक्वेंसी पर. अगर वहां पे क्वार्टरली है यू विल टेक 35%. अगर मंथली है तो जितना भी कैश आपने सितंबर की 3B में जमा करवाया है इक्वल अमाउंट you have to deposit it for the October and for the month of November. Is it clear? Cash payment, right? Cash payment. In the QRMP, the 35% which we are depositing in cash, that will be considered the cash component deposited in the previous quarter 3B, or if the previous frequency was monthly, then monthly September 3B. Is it clear?
You can see here also, if the preceding quarter return ka frequency was quarterly, then 35% of the tax to be paid in cash. And if the return frequency of the preceding quarter was monthly, then tax liability paid in cash the same amount has to be deposited. For easy understanding, they've given the example. Anand, for any quarter, month 1 and month 2, you need to pay the PMT 06 by 25th. For that, you will see the preceding quarter frequency. And based on that, you will take the amount to be deposited. दिल्ली के डॉक्टर ठीक नहीं है सर. कम टू कैलकाटा चीप, गुड एंड इफेक्टिव. पीयूष, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि मैंने जो सीए किया वो कलकत्ता से किया है, एंड आई वाज द आर्टिकल ऑफ सिंघी एंड कंपनी. टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा है, यू नीड टू पे एडिशनल 1% इन कैश. $86B would be applicable obviously, बट अगर फिक्स सम मेथड चूज करता है तो वो तो आराम से 1% से ज्यादा ही पे कर देगा. मिस्टर तिवाड़ी, दिसंबर के महीने के लिए तो एक्चुअल लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी. फॉर दिसंबर मंथ देयर वुड बी द एक्चुअल कैलकुलेशन. Whatever the liability is there of entire 3 month, whatever the amount he has paid, and balance, whatever the ITC is there, and balance has to be deposited in cash. Or if ITC is sufficient, no requirement to pay in cash. यार ध्यानेश, हर बार ऐसा ही होता है, तो आई विल नॉट स्टॉप दैट क्लास. हर बार ऐसा ही होता है एक्चुअली, तो चलता रहेगा. सर्दी है तो थोड़ा सा ये रहेगा ही रहेगा. बट ध्यान रखना, नो सच अमाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड where the balance in the cash ledger or credit ledger is adequate for making the payment of liability of that month, or if there is no tax liability. ठीक है. और सेकेंड मंथ सेम थिंग्स, कुमुलेटिव अगर ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं है. नाउ one correction I like to tell. So in this example, if you are not having any tax liability, one correction, if in month you do not have any tax liability, you are not required to deposit any amount in cash. See, October I need to deposit. Suppose there is sufficient balance in the cash ledger, not required to deposit. Self-assessment method. The self-assessment method, the name suggests, it means whatever the liability you have, whatever the ITC you have, after adjusting, you will calculate your actual liability and then pay the same through PMT 06. Now we are talking about, now we will talk about from the next class that applicability of interest. ठीक है, page 39. So अशोक जी, आप मुझे मिडल में कर सकते हैं. You can do in middle. दिल्ली में ठंड है थोड़ी,
काफी ज्यादा लग रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है, जस्ट बिकॉज कि मैं या तो तबीयत ठीक नहीं इसके लिए, मे बी। चलो सर, देखो एक्चुअल लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं करना अगर आप फिक्स सम मेथड चूज करते हैं। अगर आप सेल्फ चूज करते हैं देन यू हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल लाइबिलिटी। चलो सर, क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईएफएफ? लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चन आंसर इन द लास्ट 10 मिनट। बहुत ठंड है। आईएफएफ का पूरा नाम क्या है? आईएफएफ का पूरा नाम क्या है? आई डू अग्री ध्यानेश, बट थोड़ा कमिटमेंट है इसीलिए। ग्रेट, राइट अब्दुल। अगर लास्ट मंथ की या लास्ट क्वार्टर के महीने में 3B में कुछ भी कैश डिपॉजिट नहीं किया, अगर मैं 35% मेथड चूज करता हूं, नो रिक्वायरमेंट टू पे एनी कैश। व्हाट इज द ड्यू डेट? Perfect. What is the due date of the GSTR1 in case of monthly and in case of quarterly? What is the due date of the GSTR1 in case of monthly and in case of quarterly? ठीक, ठीक है आलोक, अदरक वाली चाय पीऊंगा मैं पक्का। अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद वही वाला पीऊंगा मैं, अदरक वाली चाय। अब बच्चे लोगों ने काफी सजेशन दिए, गर्म पानी पीना, नमक के पानी से गरारे करना। एवरी सजेशन आई विल टेक केयर। आई एम डूइंग द सेम ऑल्सो, बट अब मैं स्पेशली करूंगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ GSTR1 इन केस ऑफ मंथली कॉमा इन केस ऑफ क्वार्टरली? आनंद 11th, आनंद 11th है मंथली के केस में, क्वार्टरली के केस में 13। मिस्टर तिवाड़ी, द डेट यू हैव रिटर्न इट इज फॉर द मंथली GSTR 3B। अब मुझे बताएं 3B इन केस ऑफ मंथली एंड इन केस ऑफ द क्वार्टरली क्या ड्यू डेट है? अच्छा ऐसा है, ठीक है यूसुफ भाई, आई विल ट्राई दैट ऑल्सो। ठीक है यूसुफ भाई, थैंक यू, थैंक यू प्रियंका। सो monthly due date is 20 and quarterly would be 22 or 24। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मुझे बताएं what would be the due date of payment of tax in case of QRMP? What is the due date of the payment of the tax in case of the QRMP for M1, for M2, for M3? मुझे आप तीनों महीने का डेट बताइए। मैंने आपसे पूछा कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ QRMP M1, M2 एंड M3, तीनों डेट आप मुझे बताएंगे। ओ सॉरी, 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 मुझसे नाम नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैं पीछे वाला सरनेम यूज कर रहा हूँ। मुझे ना
मतलब एक तो जुमली वाला यूसुफ भाई दिख रहा है, तो मैंने सोचा पीछे वाला सरनेम यूज कर लेता हूँ। चलो ठीक है मौसी। करेक्ट। M1 25th, M2 25th, M3 22 या 24। वेरी नाइस। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, आईएफएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आईएफएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? व्हाई दिस आईएफएफ, और व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ आईएफएफ? Mr. Srinath, I have discussed whatever the amendment was there, I have discussed during the class itself. Like date of correction of GSTR, time limit to make the correction, rectification in the GSTR1. The biggest advantage that recipient will get the ITC. For taking the ITC, whether 2A is relevant or 2B is relevant. For taking the input tax credit, whether 2A is relevant or 2B is relevant. आई थिंक नहीं किया सर प्रणव, शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगा, मई 23 के बैच के लिए शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगा, बट एक बार आप पता कर लेना इंस्टीट्यूट। टू 2A or 2B? The answer is 2B for the ITC. What is the difference between 2A and 2B? Which one is the static? Which one is the static? 2A static है या 2B static है? Which one is the static? 2A or 2B? Two B is static and 2A is the real time. Next question, GSTR1 का फॉर्मेट, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि interstate 2 lakh will be reported invoice wise or consolidated. Invoice value 2 lakh interstate will be reported consolidated or invoice wise. B2C. B2C interstate invoice value 2 lakh rupees will be reported invoice wise or consolidated. Pranav, would you like to change your answer? Partha, would you like to change your answer? Because probably you've given the answer before completing the question as B2B ki B2C. Answer is absolutely correct. Consolidated in the table 7. Which two tables are appearing? Not give, please do not give the name of the table. Please give the
description of the table. Which type of the details we are required to enter in the IFF? Which type of the details we are required to enter in the IFF? Wow, Geet Chauhan, excellent answer. For B2B registered party, inter हो या intra हो, doesn't matter. 4A, 4B, 6B, 6C, number not required, table number not at all required. Mainly you have to write the description, whether it is supplied to the SEZ or deemed export or registered party. And debit note and credit note issued to the registered party. Only these information to be entered in the IFF. पर इनका क्वेश्चन मेरा ये था कि IFF के केस में हम कौन सी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं। IFF के केस में हम आउटवर्ड सप्लाई की कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। टेबल नंबर मुझे आंसर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए 4A 4B 6B 6C, नहीं, मुझे आंसर चाहिए डिस्क्रिप्शन क्या क्या। एक बार आप मटेरियल देख लेना, स्टडी मटेरियल, अकॉर्डिंगली जो भी याद करने के लिए आंसर वो रख लेना। एनी अदर पॉइंट इफ यू हैव? क्लासेस ओके चल रही है ना? क्लासेस इज गुड ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज ओके? एक बार कंफर्म करो। The classes and every stuff is okay, up to your mark, up to your expectation level. Any question you can ask? Any question you can ask? Any question you can ask. If you have any question, kindly ask. Do you have any question? Do you have any question? Piyush, kindly ask. ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। कंपोजिशन का रिटर्न ईयरली है, कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अच्छा, एक जल्दी दे दिया प्रणव, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, भले लेट हो लेकिन क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आएगा तो मजा आएगा। यू विल फील कॉन्फिडेंस, डिफरेंट कॉन्फिडेंस यू विल फील। सो लास्ट जो मैं 10-15 मिनट एमसीक्यू लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें आप ट्राई करो, 2 मिनट ले लो, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर, तो दैट विल गिव द रिकन्फर्मेशन वॉट एवर यू अंडरस्टूड इज इन योर माइंड, एंड दूसरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, नो डाउट। प्रणव, आई थिंक यू आर आस्किंग द क्वेश्चन ना? कविता, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सेंड नहीं करूंगा, लेकिन जो लास्ट 2 क्लास जो मुझे प्रैक्टिकली लेनी है ना, उसके लिए मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आई विल टेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पास्ट प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन द पास्ट जो भी पूछे गए। अच्छा पीयूष, I am a GTA, taken the ITC on my vehicle and I'm giving the service only on RCM. Then how I will utilize or get benefit of ITC? Not allowed. Not allowed.
ITC not allowed if your outward supply is covered under RCM. Why? If you read the 17 subsection 3, it says that outward RCM is an exempt supply. Now read 17 subsection 2. If my outward supply is exempted, then I am not able to take any ITC to the extent of exempt supply. So the answer, Piyush, answer to your question, no ITC would be available if outward is covered under fully RCM. क्लियर? एक बार कंफर्म करो. नहीं, हाँ कविता, GSTR1 है नील, GSTR1 एकदम सेम है. खाली GSTR1 अगर डेटा है तो वो GSTR1 विद डिटेल्स बन गया. विदाउट डिटेल मतलब सारी टेबल नील है, कोई भी टेबल में कोई भी डिटेल्स आपने ऐड नहीं की, दैट इज नील GSTR. सिंपल. थैंक यू प्रभात. So thank you very much. Good night to all of you. We'll meet in the next class. That would be the last class for the topic, and then after that we will have the 2 practical case study classes. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. अशोक जी, you can wind up.